Hello everyone. I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to study about electric dipole. So as we all know that electric dipole is, we can say, if there are two charges, q and minus q, or we can say when two opposite charges are separated by some distance, let us say 2a, or we can say something like 2l, then they are called as electric dipole. And the basic structure of the electric dipole, we can draw it like, if there are two charges, plus q, this charge is plus q, and the another charge minus q, and their center to center distance, that is 2a, then they are called as electric dipole. And the electric dipole, because of the electric dipole, we cannot say that directly that the electric field will be zero, because we know that the electric field due to the electric dipole is existing. और इनके क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स है, वी कैन से दैट यहाँ पे दो चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2a. तो because of that electric field generate होगा and it will not be zero exactly. And yes, of course we can say that अगर इनसे कोई बहुत ज्यादा दूरी पे डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, let us say there is a point where r is greater than very much greater than 2a, then obviously we can say that the field will be nearly zero, but not absolute, we can say absolute zero, but the field will be nearly zero. And in general sense, we know that the field due to a point charge q is E equals to kq by r square, kq by r square. And we know that at the time of dipole, it will be we can say cubed. So that is why we can say that the the field due to electric dipole is not zero. And the electric dipole creates electric dipole moment. तो moment क्या होता है? Electric dipole moment, let us say there are 2 point charges. Here it is plus q, and at this point it is minus q, and the distance between them, it is 2a. तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, the direction of the electric dipole moment will be from negative charge to positive charge. It is always from negative to positive charge. So this will be the direction of electric dipole moment. And we can say that the electric dipole moment, is p vector equals to q into 2a p cap. This is the form of electric dipole moment. P vector equals to q into 2a into p cap, where p cap is the direction of electric dipole, and the direction of the electric dipole is the direction of dipole moment is the direction of dipole moment is along along the line joining from minus q to plus q. यानी कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को, तो माइनस क्यू चार्ज से जो क्यू की तरफ जो लाइन जा रही है, उसी के अलोंग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा. Okay, now we are going to study the electric field produced due to the electric dipole. So we can take two cases here. The one case is when we take a point on the axis of the dipole. Axis, we by axis we can say it is the point on this particular axis, and
the second point which we can take it as the point in the इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि एक जो डाइपोल मोमेंट है, अगर इसको एक प्लेन में इफ वी इफ वी अज्यूम एनी 2D प्लेन, देन इफ वी टेक अ पॉइंट इन दैट प्लेन वेयर द वी कैन से दिस डाइपोल मोमेंट इज प्लेस्ड, तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ओके, सो फर्स्ट केस, we are going to study first case. The electric field at the axis of dipole. The electric field at the axis of dipole we are going to study now. Okay, let us draw the diagram which support our case. So first point that we are going to take, it is the positive charge. Now here we are going to take it as negative charge. So here it is negative charge and here it is positive charge. Now we are going to draw an axis which is passing through the line joining these points. Wait a second, wait a second. Okay, let me draw these charges again, because I'm not able to draw it properly. Wait a second. Okay, now draw the charges. So here it is the positive charge and here it is the negative charge. And this line may go on both the sides. Okay. And let us suppose that there is a point. There is a point on this axis. Let us say the point is here. The point P is here. And the center, now we are going to take the distance from the center. So now point out the center. This is the center here. And the distance between these two charges is 2a, and we can say that they are equally placed. We can say uh, they are equidistant from the center point O. Now the point P is distance r from the center point of this dipole moment. Okay, and the direction of the electric field, obviously it will be along the we can say the direction of the electric field will also be along the dipole moment, which is we can say which is from minus q to plus q charge. Okay, now the distance of positive charge, the distance the distance of the positive charge from point P, it is, as we can say, it is r minus a, and the distance of the negative charge, it is r plus a. Okay, as you can see,
यहाँ पे जो डिस्टेंस है, the distance of, we can say any charge which we can say either the positive charge or the negative charge, both are at a distance a from the center. ये वाला सेंटर है, इस सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है दैट इज a, इसकी भी a है और इसकी डिस्टेंस भी a है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अपन पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो पॉइंट चार्ज Q से कितना डिस्टेंस पे होगा? R, ये जो R डिस्टेंस है वो पॉइंट O से, जो सॉरी पॉइंट P है वो डिस्टेंस O से R डिस्टेंस पे है। तो हमें इतना डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, सो इट विल बी टेक्निकली R माइनस ए। एंड जो पॉइंट माइनस Q है वो इससे A डिस्टेंस ज्यादा है, सो दैट्स वाई our point P is at a distance R plus A from the negative point Q. Okay. Now there will be, we can say, two electric fields. One field that will be because of the positive charge, and the another field that will be because of the negative charge. Okay. Now the magnitude of the charges. Okay. As we know that the electric field due to a positive charge, the electric field due to a positive charge is away from the charge, and the electric field due to a negative charge is towards the charge, the direction of the electric field which I am talking about. तो यहाँ पे जो चार्जेस दो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, there will be two electric fields. One will be because of plus Q, and its direction will be along the direction of we can say the net electric field. And there will be one another electric field that will be E minus Q. Okay, now the the electric field, the electric field at point P due to positive charge, due to positive charge कितना होगा? That will be E plus Q equals to K Q upon R minus A का whole square, R minus A का whole square. This will be the electric field. Okay, where what is K here? It is 1 upon 4 pi epsilon 1, and it is called the electrostatic constant. Okay, now the another electric field, the electric field, the electric field at point P due to minus charge कितना होगा? It will be E minus Q will be K Q upon R plus A का whole square. Here I am writing the magnitude of the, we can say, the electric fields. That is why I am not putting the sign. So A E minus Q is KQ by R plus A ka whole square. Now the net electric field, the net electric at point P, और point P कौन सा point बोला जाएगा? It is axial point. ठीक है, it is an axial point. तो उस point पे क्या होगा? The electric field E will be E plus Q, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में है, so it will be taken as positive, and E minus Q. That's how we add the electric fields. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज अलोंग दिस लाइन, और जो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव. ओके, सो ई विल बी के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर.
Now further more we can solve it. So it can be written as E equals to KQ. It can be taken as common. So it will be 1 minus R square minus 1 up plus R whole square. Okay. Now when we take the LCM, so it will become KQ times R plus A ka whole square minus R minus A ka whole square divided by R minus A ka square into R plus A ka square. Okay. Now let us open the squares. So we will get KQ times R square plus A square plus 2A into R minus R square minus A square plus 2A into R. Because this minus sign will also get multiplied with the square, we can say expanded form of the square. Now in denominator, if you see it, both are the squared quantities. Now we can directly multiply them. So it will become R minus A multiplied by R plus A and its whole square. Okay. Now when we solve it further, so we will get K into Q. देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर से माइनस A स्क्वायर चला गया. Now we get now we get 4AR 4AR divided by this is R minus A and R plus A. So we can directly do R square minus A square and its whole square because the outer square is also there. Okay. Now we get this equation. Now if you see clearly that, and one more thing here, that the electric field, the vector form of the electric field will be, it will be E vector R vector into KQ into 4A into R divided by R square minus A square and its whole square, and the direction will be along PK. The direction is along PK. Okay. So this is the electric field due to a dipole, and the electric field at an axial point. Axial point पे कितना electric field होता है, this equation tells us. अब यहाँ पे अपन एक चीज पुट कर सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर, जो अपन ने डाइपोल मोमेंट लिखा था. व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इफ यू सी, द डाइपोल मोमेंट इज p वेक्टर इक्वल्स टू q into twice of a into pk. तो इसको अगर अपन लिखेंगे, so this electric field will become, as we know, dipole moment dipole moment is p vector equals to q into twice of a pk. So this quantity from the we can say above given format will be written as E vector equals to k. This q into 2a will be replaced, q into 2a into p cap will be replaced with p vector, and you will left out with k into 2r and p vector k into 2r into p vector divided by r square minus r square minus a square, r square minus a square. This you can write.
and obviously its square is also there. So that's how you can write the electric, we can say dipole, the electric field due to a dipole at an axial point. Okay. Now we can solve it further for we can say for another condition. If R is very greater than A, then obviously this quantity will become R square minus A square. This will be nearly R square. This will be nearly R square, and then we get the equation as E vector equals to K into 2R into P vector upon this is R square, so it will be R4, and we will get an equation as this R will cancel this R4, we can say its power will be deducted by one, so it will be 2 kp vector upon R cube, 2 kp vector divided by R cube. So this is the electric field. This is the electric field at an axial point for the case where R is greater than A, for this case at an axial point, at an axial point. So that's how we can denote the electric field. Okay, now we are going to assume some another case in which the point of interest at which we want to find out the electric field, we are going to take a point in the equatorial plane for the given case, or we can say for the electric dipole. Okay, now case number two. The electric field at a point, या फिर लिख सकते हैं अपन at equatorial point, at equatorial point. Okay, so for the equatorial point case, what we can see, we can see a electric dipole here in which two points are placed. As we can see here, two points are placed, plus minus q and plus q, and there is a plane. This is the plane, equatorial plane, and in which we have taken a point P. This is the point P at which we want to find out the electric field. And the distance between these two charges is 2a, and there is a point, here, which is, we can say, the point O, or we can say the center. We can say the center of this dipole. This is the center of the dipole, and the distance of the center of, in the earlier case also we have taken the distance from the center of the dipole only, that was r, and in this case also this the distance of that point at which we want to find out the electric field, it is also taken from the center of the dipole. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सेंटर है, तो ये वाले सेंटर से अपना डिस्टेंस कितना है, दैट इज r। और ये जो पॉइंट है, ये वाले एक्सिस से इसका हो गया, ये जो इसका एक्सिस है, उसके एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल है इसके साथ थीटा। ओके, वेरी। नाउ इफ ये वाला एंगल है इसके साथ थीटा, और अब यहाँ पे अपन फाइंड आउट करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। तो जो, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ होता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विच इज ई प्लस क्यू, ये इस वाली डायरेक्शन में जाएगा। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो उसकी जो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज हमने रखा है उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस ई माइनस क्यू, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई प्लस क्यू। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली इट विल गिव अस एनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये वाली डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एंगल थीटा, इसके साथ एंगल थीटा है यहां से, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और इस पॉइंट के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी ई प्लस क्यू इंटू कोस थीटा। और एक पॉइंट जो इसके वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा दैट विल बी ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है। सिमिलर केस होगा, ये वाला एंगल भी थीटा है इसके साथ, तो ये वाला एंगल भी अगर थीटा है इसके साथ, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि सेम डिस्टेंस पे ले रहे हैं इसको। तो जो इट इज ऑब्वियसली वी कैन से it is the we can say the angles of the equal the opposite angles of the equal sides। so अब इसमें ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। और इसके साथ जो कंपोनेंट है दैट इज, और वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा है, ई माइनस क्यू। तो इसका भी एक ये वाली डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ई माइनस क्यू टाइम्स कोस थीटा। एंड सी केयरफुली, ये वाले के साथ वी कैन से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके साथ थीटा एंगल बना, तो इसके साथ जो एडजेसेंट कंपोनेंट होगा दैट विल बी cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ये वाले डायरेक्शन में अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, ई माइनस क्यू साइन थीटा। Okay, now it will all depend on the magnitudes of E plus Q and E minus Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। उस पे डिपेंड करेगा कि ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट अपने पास आया है, जो इक्वेटोरियल प्लेन के वर्टिकल कंपोनेंट जो अपने पास आया है, वो कैंसिल होगा कि नहीं। अगर वो ये ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इक्वल है तो दोनों ऑब्वियसली दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दे विल बी कैंसल्ड आउट, सीधी सी बात। और ये वाला जो कंपोनेंट है ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा दे विल बी एडेड अप। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कितना है। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके, तो दिस इज द, वी कैन से, if we see if we see that if we see that this is the the distance of the distance of point P from the distance of point P from plus Q charge is कितना है, इट इज, ये देखो ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इसका जो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है, इट इज ए स्क्वायर, सो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड the distance of
point P from negative charge, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ we are going to write the electric field due to these two charges. Okay, now the electric field, the electric field at point P due to positive charge, तो कितना हो जाएगा? it will be E plus Q equals to k q upon r square plus, अच्छा ठीक है, वन सेकेंड, आई हैव मेड a mistake here. So it will not be directly square because it will be the square root of this one, r square plus a square, because ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया ना। ओके, square root of r square plus a square, and as we know that the electric field is kq upon the distance square, तो उसका square root का square होगा, so we will finally get r square plus a square only, and the electric field at point P due to negative charge कितना होगा? It will be also the similar thing. Be careful, I am writing the magnitude only, I am not taking the direction, so that's why their magnitude will be equal kq upon r square plus a square, r square plus a square. Now you can see clearly that E plus Q is also kq upon r square plus a square, and E minus Q is also r square plus a square, दोनों चीज सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट इन द डायरेक्शन वाइज, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम चीज है। सो वी कैन से दैट in magnitude form, in magnitudes, E plus Q is equal to E minus Q. So we can definitely see that this component, ये वाला component E plus Q और E minus Q दोनों सेम हो गए, तो this E plus Q and E plus Q sin theta and E minus Q sin theta, they are opposite in direction and equal in magnitude. That is why these components these components will be cancelled out, and the only the components E plus Q cos theta and E minus Q cos theta are going to contribute in the resultant electric field at the point P। ठीक है, उस पॉइंट पे ये जो दोनों कंपोनेंट आए हैं वही उस पे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। ओके, एक चीज और यहाँ पे आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द पॉइंट्स। द components E plus Q sin theta and E minus Q sin theta are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, they will be cancelled out. They will be cancelled. अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं? सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं
the components E plus Q cos theta and E minus Q cos theta are equal in magnitude and also along the same direction. Also along the same direction. Therefore, 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 they will contribute in the net electric field. के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, नाउ आवर टाइम इज टू calculate the net electric field. Okay, net electric field at equatorial point. Equatorial point P कितना होगा? It will be E equals to E plus Q. It will be E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta. ठीक है? Okay. So electric field will be KQ upon R square plus A square cos theta plus KQ R square plus A square cos थीटा. दोनों चीज सेम क्यों लिखी है? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है. ए ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों सेम है और cos थीटा इज cos थीटा, सो दैट इज व्हाई बोथ द क्वांटिटीज आर सेम, सो दे विल बी डबल्ड. सो कितना हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी at point P. It is not necessary to write P here because twice of K into Q cos theta divided by R square plus A square. R square plus A square. Okay. R square plus A square. This is the, we can say, the form of, it is the form of the electric field at the point, equatorial point, 2kq cos theta upon R square plus A square. Okay. Okay. So now here we can put the value of cos theta, which is, what is cos theta here? From the above diagram, we can see that the cos theta is, as we know that cos theta is base upon the hypotenuse. So here the cos theta is, the base is, it is A, and hypotenuse is the square root of R square plus A square. This is cos theta. Now let us put the value of, or we can say the expression of cos theta. Let me write here, since cos theta is A upon square root of A R square plus A square. So the equation will become, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा? E will be 2kq into, 1 second, 2kq into A
2kq into a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. If we simplify it, then we will get E equals to twice of k q into a अपॉन, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर वन है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर वन बाई टू है. सो इट विल बी added because the base is same. So r square plus a square and its power will be 3 by 2. Its power will be 3 by 2. Okay. Now we can see that if we rearrange the equation, we will get, okay, if we write in the, we can say in the vector form, then it will be, okay, be careful about writing it in the vector form, because you can see that ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वी कैन से नॉट एग्जैक्टली द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वो कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वी कैन से द डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो उसमें एक नेगेटिव साइन आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आए हैं दैट आर इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, एंड जो डाइपोल का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज व्हाई दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. सो लेट मी राइट हियर electric field, it is electric field will be twice of uh one second, twice of kq into a upon r square plus a square power 3 by 2 minus of pk, minus of pk. This is the direction of the electric field at this point. और यहाँ पे एक चीज है that we can replace, so that is e vector equals to, minus sign will come out and you will get k into q into twice of a. k q के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं 2 into a, so it will become r square plus a square and its power is 3 by 2 pk. Now as we know that, as we know very well that dipole moment है, that dipole moment is q into twice of a into pk. So it will be, the electric field will be, the electric field is E vector equals to minus of k into p vector, minus of k into p vector upon r square plus a square and its power is 3 by 2. This is the electric field at the, we can say this is the electric field for the given dipole in the at the equatorial point. Let me write here the electric field due to a dipole at equatorial point. इक्वेटोरियल पॉइंट. अब सिमिलरली वही केस लेते हैं जहां पे if the r, the distance r of, we can say the distance of the point p from the center is very we can say very much greater than a, then we will get the equation as E vector equals to minus kp vector upon this r square
plus a square will be nearly equal to r square. So simply we will get r square and its power is 3 by 2. And finally we will get it as e vector equals to minus kp vector upon r cube. So this is what the electric field at the equatorial point for the case where r is greater than a, or we can say very much greater than a. So these are the electric fields at, we can say, very far points from the dipoles. Dipole से ये जो काफी मतलब we can say as compared to their we can say the distance between the distance between the charges, ये वाला distance जो r है that is very much greater than. तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जो एक्सियल पॉइंट पे आया था, और दूसरा वाला कहाँ पे आ रहा है जो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया था, वो कुछ इस प्रकार से होगा. तो दोनों को अगर एक साथ में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? फोर फोर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना है? एज वी नो दैट इट इज 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब. वी कैन गो बैक एंड सी कितना आया था. इट इज 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब. ठीक है. एंड इन द सफिक्स फॉर्म वी कैन राइट इट एज एक्सियल ऑल्सो. इट इज एक्सियल. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पे कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट कितना है? इट इज इट इज ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब. ठीक है. वेर के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द वैल्यू ऑफ the electrostatic constant. Okay. And we can write it in the suffix here also that it is at the equatorial point. Equatorial point. So that is what the electric fields due to a we can say a dipole at a at an axial point and at an equatorial point. अब आप इसमें कुछ देख पा रहे होंगे, अगर दोनों का मैं मैग्नीट्यूड लूं, if I take the magnitude if I take the magnitude of axial, we can say electric field at axial point and electric field at equatorial point, then we can see that the electric field at axial point is just twice of the electric field at the equatorial point. ठीक है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे है वो उसका 2 टाइम्स है, ट्वाइस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो. अदरवाइज उसका डायरेक्शन तो डिफरेंट है, बट इसमें जो मैग्नीट्यूड है उसमें इतना ही वेरिएशन है कि वो उसका 2 टाइम है एट अ वेरी ग्रेटर डिस्टेंस. ठीक है. ये डिस्टेंस है दैट इज वी कॉल इट एज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस. एंड वी कैन सी दैट इट इज नॉट जीरो, क्योंकि अपने अपन अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो डाइपोल है, तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, इट इज ऑलवेज जीरो. ठीक है. बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इट इज नॉट जीरो. और इसका जो डिपेंडेंस हुआ वो किस तरीके से हुआ, we can see that that that, that is why
Therefore therefore the electric field dependence on R। R पे कैसे डिपेंड करता है ये? इट इज मैग्नीट्यूड वाइज इट इज proportional टू R cube। It is proportional to R cube, and it is sometime it is directly asked in the exams also कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, डायपोल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डिस्टेंस R पे किस तरीके से डिपेंड करता है। सो इट इज, देखो जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैं जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता रहा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये होता है। जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², और जो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दैट इज 1 अपॉन, इफ वी सी इट इज 1 अपॉन ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन the electric field due to a point charge and the electric field due to a dipole. I hope you understood the points and the explanation. And if you have still doubt, then you can ask me. I'll try to resolve. Okay, thank you.